Good morning, gentlemen and ladies. Our chief guest has arrived, former Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji. Let's all welcome him. We also extend our heartiest welcome to our guests, Captain Yogendra. I will now take this opportunity to request Dr. Gyaneshwar Mule to welcome Shri Naidu ji. Thank you. I would now invite Shri Rajmukh Deshmukh ji to tell us about the 13th Summit on Leadership on Positivity. मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, सर उसको पाथ ऑफ पॉजिटिविटी बोलते हैं। डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुले सर के मार्गदर्शन में जो स्थापित हुआ है उसे हिंदी में हम अच्छाई का अभियान कहते हैं। तो क्या है अच्छाई का अभियान, क्या है? भारत में अनेक स्वयंसेवी संस्था अपने अपने तौर पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन सब संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी करता है। जो भी भारत देश में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने विचारों को लेके, भारत देश की प्रगति को लेके अच्छा काम कर रहा है, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म के, एक अम्ब्रेला के नीचे लाके उसका मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी ऐसा हम कहते हैं। What a great pleasure it is to see all of you. बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबको यहाँ पर देखकर। ये मेरे लिए और हमारे अच्छाई के अभियान के लिए एक स्वर्ण क्षण है और मुझे खुशी है कि आप इसको मनाने में यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय, जो कि सामाजिक कार्यों के लिए बहुत प्रतिबद्ध है, यहाँ उपस्थित है। हमारे लिए बहुत गरिमा की बात है, गौरव की बात है। हम सब लोग एक बार उनको तालियों से स्वागत करें। सकारात्मकता जो है वो आनंद का उत्सव है। सकारात्मकता देश प्रेम का उत्सव है। सकारात्मकता एक दूसरे को मदद करने का उत्सव है। आदमी को आदमी से जोड़ने का एक प्रयास, इसका मतलब है सकारात्मकता। इस देश के संविधान में जो मूल्य है उनको किस तरह से वर्धित करें, इसके बारे में सोचने का और उस दिशा में प्रयत्न करने का तरीका है सकारात्मकता। भारत की जो वैश्विक संदेश है, चाहे वो विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम हो, चाहे सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, इसको किस तरह से हर भारतीय में हम लाएं और विश्व के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, इसके बारे में सोचने वाला और उस दिशा में काम करने वाला अभियान जो है उसका नाम अच्छाई का अभियान है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग इसमें आए हैं। आज भारत की 3 मेरे ख्याल से सपने हैं, उसको एम्बिशंस भी कह सकते हैं, एस्पिरेशंस भी कह सकते हैं। क्या है? पहला तो है हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, है ना? दूसरा है हम चाहते हैं कि हमें दुनिया में पॉलिटिकली, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं, यह है दूसरी बात। और तीसरी बात जो है, दुनिया की आज जो 3 प्रमुख समस्याएं हैं, एक है गरीबी, दूसरी है पर्यावरण की समस्या और तीसरी है
शांतता या शांति के लिए जो चुनौती है, युद्ध चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स है, लोग एक दूसरे के साथ मारामारी करते हैं, ये 3 समस्याएं, इसके खिलाफ जो है संघर्ष करके विश्व में अपना एक स्थान प्रस्थापित करना, ये भारत का आज का आत्मनिर्भर भारत मैं कहता हूँ, वो हमारा सपना है। किस तरह से इसकी तरफ जा सकते हैं, इसका कोई एक सूत्र नहीं है, लेकिन वो सूत्र खोजने की तलाश जो है वो है अच्छाई का अभियान या मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी। तो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी एक ऐसा सूत्र बन सकती है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, बदलने की क्षमता इसमें है। और ये जो हमारे है And ladies and gentlemen, what better time than today could it be to announce the launching of the Movement of Positivity's national Hindi web channel called Jan Gan Ki Baat. This is a brand new platform where lots more stories of positivity will be available to our viewers. I would request Sri Venkat Naiju and Dr. Mule to unveil the channel logo and its formal launch. Thank you. It's time to felicitate our awardees for the leadership of positivity. Sri Shivmani is a renowned percussionist. He's called Drums Shivmani. He's been conferred with the prestigious Kalai Mamai Award other than the Padma Shri. He plays almost 300 instruments. It's a life filled with challenges and positivity. Our second awardee is Dr. Ranju Jha LX, Vice President, Marriott International, South Asia region. She's a symbol of not just woman power, but how business world can translate just business into philanthropy and for larger good. She is the first female to lead hospitality company in India. Dr. Ranju is the recipient of Woman of the Decade in Business and Leadership Award conferred by the Women's Economic Forum, United Kingdoms, to her in 2017. A huge round of applause for Dr. Ranju. With great pride, I invite Paramveer Chakra Captain Yogendra Yadav of the Indian Army to receive the award. Grenadier Captain Yogendra Yadav displayed the most conspicuous courage, indomitable gallantry, grit and determination under extreme adverse circumstances during the capture of Tiger Hill during Kargil War. He received the Paramveer Chakra for his selfless sacrifice and valor. We are honored to hear Captain Yogendra Yadav ji. I invite him to deliver his acceptance speech. Yogendra Yadav ji. ये सच में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और जब पॉजिटिविटी अगर इंसान के अंदर होती है तो इंसान न जाने क्या से क्या कर सकता है, क्योंकि एक इंसान ऊर्जाओं का ही सार है। अगर उसमें ऊर्जा है और पॉजिटिव ऊर्जा है तो वो बड़ी से बड़ी चोटियों पर, बड़ी से बड़ी मुश्किलात को, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से पार कर सकता है। और मैं
बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, और सर ये पॉजिटिविटी ना होती तो शायद आज मैं आपके सामने भी नहीं खड़ा होता। और भारत के अंदर ये पॉजिटिविटी, ये अच्छाई की सोच हर जन जन में अगर फैलेगी तो ये देश सच में विश्व गुरु बनेगा, और हम पूरी दुनिया के ऊपर एक नई संस्कृति को बना करके एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। और हमारे अंदर वो चीज़ है, बस सिर्फ एक नौजवानों को तो सिर्फ एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। इस देश के युवाओं में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, बस एक सही डायरेक्शन, सही समय पर सही अगर इनको गाइड किया जाए तो ये युवा इस देश की दशा और दिशा दोनों को चेंज करने की सामर्थ्य रखते हैं। I'll now invite our chief guest, Shri Naidu ji, to speak a few words. My dear sisters and brothers, I am extremely pleased to be here at the third National Summit on Leadership in Positivity. Leadership in Positivity, sounds something new, because what we are seeing and hearing is negativity. What is required is positivity in the minds of rulers, in the minds of lawmakers, in the minds of the people, and particularly across the country, the younger generation. I am informed, under the broad umbrella of Mission Positivity, a number of young entrepreneurs, civil society organizations, government agencies, educators, and climate experts, as also the academicians, come together every year to discuss ways and means through which they can contribute to the overall progress of the nation. In short, this summit is a meeting of minds who are engaged in constructive and innovative work for nation building. This is a laudable mission. Such initiatives are very much needed today in every field. I am told the Mission Positivity is the brainchild of Dr. Muleji, who has been a former secretary in the Ministry of External Affairs, and who is also now there in the Human Rights Commission. After his retirement in January 2019, it is heartening to know that now over 250 organizations working in the social, economic, and educational spheres, along with a large number of citizens from all over the country, are aligned with this mission. I hope that more and more people, organizations, they get involved with such a mission. This is a mission for the nation, without expecting any commission, or doing any remission, or giving any remission. Passion for the nation. Nation means people. Nation means not the geographical boundaries of the country. Boundaries are very important. Nation means people. This land, this people, this water, this air, these trees, this greenery, all. So we should always think in the larger interest of the nation, and then have a missionary approach. Missionary, I am not referring to those missionaries, they are different missionaries. Mission means ये हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। निरंतर हम इसको याद रख के अपना जीवन में कोई भी काम हमको मिला और दिया, उसको सचमुच में सार्थक बनाने के लिए हर एक व्यक्ति काम करना चाहिए। I am also extremely happy to see that people who have distinguished themselves with selfless service to the nation are being honored today.
It is good to know that this year, those being honored by awards and leadership in positivity would be given an opportunity to explain their work. I am informed that the primary objective of the mission of positivity is to foster the constitutional values of equality, justice, and freedom for every citizen. This is a commendable goal. I am glad that for this awareness and training programs at macro level and grassroots level activities to empower less privileged sections of society are undertaken at micro level. It is through the efforts of such organizations that government schemes and projects get better implemented. Delivery is more important. Implementation is more important. Planning, having a vision, and then getting laws passed by Parliament, and then issuing executive orders, fine. But implementation part is very important. So such organizations should really get involved at the implementation level to see that the benefits go and reach the people. The Prime Minister Narendra Bhai Modi, who has given a 3-line mantra to all of us, he said, reform, perform, and transform. Transformation of the nation. Transformation of the lives of the people. That is what is required. Let us follow the footsteps of the constitutional makers and who has given us this wonderful constitution. They have given us a right to change the constitution also, change the party, change the constitution. Through peaceful democratic means. That is the way forward. Obstruction, destruction of public property is not going to affect the leader of the ruling party. It will affect we the people. That's where positive thinking is required. What is required is we want to become a strong, stable, peaceful, prosperous nation. Atmanirbhar Bharat. Strong and peaceful, not to attack others, to help others. That's how India wants to become a strong nation. Show me in the entire history, India once upon was Vishwaguru. Students from across the globe, they used to come to Nalanda, Takshashila, Vikramshila, many of these education institutions. Were there any instance of India attacking any country? All other small countries, they attacked others, they attacked us, they ruled us, they ruined us, they cheated us, they looted us. India never attacked. What is the size of England? What is the size of Portugal? And what is the size of India? Because of disunity. Quarreling on small petty issues. They have taken advantage of it and then came and really enslaved us. We should really come out of that mindset, follow our path. Positivity should be our slogan, our path. It should not be mere slogan. It should be our path. It is the way we should all follow and move towards building a strong, stable, prosperous nation. Come out of the small weaknesses that are there and then become an ideal nation once again. I am very happy that I have been invited here today for this function. Friends, once again, thank you all. I would like to thank you all and Muleji for giving me this wonderful opportunity. Namaskar. Jai Hind. As we will continue with our next program, I will
When I started my life, I don't have a full drum kit. I have only one broken cymbal and one snare drum. Even either I don't have a stand, I have to put in the stool. This my snare drum and the broken congo. That is my weapon. Like I play that. In '90, I was called in Germany with the band Mangalam. So we performed in Frankfurt Music Messe. Okay. There's the music, all the dealers they'll meet, and all the new companies and all the famous companies, exactly Zilzian, Paste. So I didn't carry my cymbals. So I went to the Paste company. I asked them, "Will you please help me? I'm from India. I want to play today in gallery." Right. So they refused to give the cymbals. Okay. And then I went to Zilzian, and I went there and I asked Mr. Bob and Armand Zilzian. He was there, entire family, Zilzian family. Okay. And Bob said, "Where you playing?" No, I said, "In gallery." So pick up your cymbals. I picked up around 15 cymbals, 1-5, different cymbals, and I called them, "Please come and play, watch my show." And I played. And I really, when I started like a Mata Pita Guru Devam, there's a rhythm. I started Mata Pita Guru Devam Ganapati Shankara Takadinna Tom Tatakadinna Tom Tatakadinna Mata Pita Guru Devam Ganapati Shankara Takadinnato Tatakadinnato Takadinnato Takadinnato Takadinnatom Tom. So I started playing that, and then people went and we started our pieces. As soon as I finished in the audience, my guru Billy Cobham, one of the greatest drummer, Okay. he was there, and Terry Bozzio, all the top drummers in the world. And then after the concert, the Zilzian company Bob came. He brought a kind of one paper and said, "Please sign here." Okay. I signed. You are endorsed from today Amazing. for this company, and they provide wherever I go. I inform them. They will set up all my symbols. And last 25 years of celebration, they send one nice gift for me. And Amazing. this symbol is the best symbol in the world for me. Okay. Okay. Yeah. Just one more thing. You told us right now about your session for Vande Mataram, of course. You have this one performance which always sticks out for you, like where you were like, okay, this is me making my mark on the world, and this is me, announcing myself that here I've come. We had one of those shows where we knew that okay, we've announced ourselves, and this was our coming of age show. What was that memory for you? Your favorite show, one of your biggest moments where you realized, okay, this is who I am. There's 3 moments in my life, the best. The one is first playing with Ustaz Zakir Hussain sir and Allara Khan sir, Viku Vinayakaram sir, and Billy Cobham, all my masters on the same stage in Rang Bhavan. All right. The second one is in Robben Island, playing for Mr. Nelson Mandela sir. Okay. Okay. And then third in our Rashtrapati Bhavan for Abdul Kalam sir. All right. When I'm playing, he got up from his chair, straight away came and he said, "I want to learn from you, I want to play." So he started playing. And of course, I shared the stage with Michael Jackson. Oh. So that was the best moment. Yeah.
Luckily for me, my parents were very progressive, though the community around me was very, very conservative. I grew up till the age of 18. I had absolutely no aim in life. And to all the kids out there, it's okay not to know what you want to do in your life. Though I knew what I wanted to do in my life, till the age of, I think, 17 and a half, to be precise, I wanted to marry a film star. Qayamat Se Qayamat Tak had just released. I was completely in love with Amir Khan. My plan B was Akshay Kumar. So if I couldn't marry Amir Khan, Akshay Kumar would also work very well. That was the only dream I had in life. How I would meet him, how I would get married, I had no idea. But I knew I wanted to be a rich Bollywood wife, tagging along, seeing the world. God had other plans. When I was 17 and a half, I was struck with a very bad neurological disorder where I got 6 cysts, tumor-like cysts in my brain, and 6 in the body. When did my life change? There was one particular day where the doctors had given my parents 48 hours of watch. For me, if I survived that, there were chances I would make it. And I remember there was a relative of mine from my Bihari community who came to see me. And my mom was crying at my bedside, and he told my mother, she's a girl, why don't you just give up? Let her go. She's a girl child at the end of the day. I have an older sister and I have an older brother. Anyway, I was the third and a girl. And I remember in my haze, my memory was completely lost. I was in and out of the hospital. I was all of 105 kilos because of the steroids that were pumped into me. I was a mess, mentally and physically. But at that particular moment, I told God, let me live. And I will show the world what women can do or a girl child can do. I think if you asked me if there was one moment when my life changed, I would definitely say that was a moment where from an Amir Khan loving, teenager, adolescent, frivolous, I grew up overnight and I said I wanted to do something with my life. I didn't know what. I didn't know which way I would go. Anyways, after 2.5 years, I did come out, and the doctors had said I could not study because of my brain pressure. To all of you sitting here, I still have 3 in my brain. I live with them. They are too deep-rooted to be operated upon. I came out, and the doctor said she can't study, she could not take any kind of pressure because her brain pressure is very high. My mother, who was a very quintessential Bihari housewife all this while, walked up to me one day and said, even if you have to work as a house help in somebody's house, go and earn your money, don't sit at home. We will pass away, we will put some money in the bank, we will pass away, but you will always be a liability to your brother. So do something with your life. I know the doctors have said you cannot study, but do something with your life. Well, I got up, I gave my 12th exam from the hospital bed. And today when people say, oh, you've achieved, you are a woman leader, all of that, to me, my biggest achievement was passing the class 12 with the first division from the hospital. That success defined that I had defied the medical sciences to move forward. And then more drama began in my life. I come from a very educated Bihari family where I think someone spoke in the morning about you either become a doctor or an engineer or civil services, nothing else matters. I decided to get into hotels. The whole community descended upon my family saying, if she joins hotels, no respectable person will ever marry her, no respectable person will ever marry any girl from our khandan. That was thrown at me. The one person who really stood by me through this journey was my father. He came up to me and he said, you've got a second lease of life. No one knows the pain that you've gone through. Go live your life. It was a typical Jaat ji le, Simran apni zindagi ji le kind of a moment. And I joined hotel school. In hotel school, I met the love of my life, my husband who's here.
A typical Bihari Brahmin girl marrying a Catholic Malayali boy. Again, everything erupted at home. So at every stage, I have defied what was expected out of me as a woman. And hotels is not an easy job. It's 12 hours, minimum 14 hours of work. It is an extremely male-dominated industry. You might see a lot of women in the reception, but that's where they are regulated to. They don't really rise up to the top, maybe because you spend so much time in hotels that your family life really is challenged, and not all women have the resilience to move on. Despite all the medical challenges that I had, I went on to have 2 beautiful kids. My son is 24, my daughter is 22 now. And I have always been an advocate of telling the society that give that woman a chance. Let her live her life, and she will show you what she's made of. Today, of course, I speak in so many forums that I'm pretty, I feel more jubilance about beating what I did, about beating society expectations from me, about beating what the medical science had to tell me. But it's not been easy. I feel like Sri Venkaiah Naidu said, that this country has a history of giving women the position that they have always deserved. Somewhere in the modern world, the opposite has happened. Please don't get me wrong. I'm not a feminist who bashes men. I am where I am because of the men in my life as well. So I just believe in being individualist and not a feminist. And I just feel every individual, whether it's a man, woman, or of any sexuality, they need to have a platform where they're an individual first, and then they shouldn't be boxed up in any form or shape. As we move into this last session, we are honored and privileged to welcome our esteemed guests. We have with us Shri Rupala, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. We have Shri Anand Patil, Additional Secretary, Ministry of Education. We have Dr. Mule. We have Dr. Ranju Alex, and we have Padma Shri Shivmani. आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और पुनः स्वागत इस कार्यक्रम में। हम इस समारोह की तरफ बढ़ते हुए सोचते हैं कि सुबह से हमने यहाँ क्या किया। एक वाक्य में मैं अगर कहूँ तो ये सकारात्मक हमारी जो यात्रा है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ठहराव मकाम पे हम पहुँचे, और इस मकाम में सर मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। देर से नहीं आए और दुरुस्त भी आए, आपका सहर्ष स्वागत तालियों के बीच। तो इसलिए मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ इस मंच पर। गांधी जी ने कहा था कि मैं हर आँख की हर आंसू पहुँचना चाहता हूँ। ऐसी कोई जादू की कड़ी हमारे पास है नहीं, लेकिन हम हर व्यक्ति एक व्यक्ति का दूसरे एक व्यक्ति की आंसू जरूर पहुँच सकते हैं। वो जो ऊर्जा है हर व्यक्ति के अंदर, उसे उजागर करने का अभियान जो है वो एक सकारात्मकता का अभियान है। हमारे 3 स्तंभ है। पहला है सकारात्मकता, दूसरी जो बात है वो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, उसके सिवा ज़िंदगी बेकार है, और तीसरी है सृजनशीलता, मतलब क्रिएटिविटी। ये 3 जो हमारे स्तंभ है उसके ऊपर इस पॉजिटिविटी का ये मनोरा जो है वो उसके ऊपर खड़ा है। और मैं चाहता हूँ सर आप इसको आशीर्वाद दें, आप इसकी मदद करें और आगे जाने में हमारा साथ दें। आज काफ़ी नकारात्मकता जीवन में दिखती है, कहीं पेसिमिज्म है, कहीं गरीबी है, कहीं विषमता है, कहीं शोषण है। 75 साल के बाद हम अमृत काल में प्रवेश भी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भारत एक ऐसा सक्षम देश बने जहाँ एक्चुअली इस सारे जहाँ से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा का नारा जो है हम लोग गर्व से कहते रहे। तो उस दिशा में सर जाने का प्रयास है अच्छाई का अभियान। सुबह आदरणीय वेंकैया नायडू जी आए, उन्होंने संबोधन किया, बहुत ही सुंदर और सकारात्मक संबोधन, प्रेरणादायक संबोधन रहा। उसके बाद हमारे 2 सेशन भी रहे, जिसमें 2 बहुत प्रमुख व्यक्तियां जो आपके साथ बैठी है मंच पर, उनका सम्मान हो गया। और आपके आशीर्वाद से हमारे जो कुछ, जिनको हम प्रातिनिधिक है, क्योंकि सब लोग यहाँ बहुत कुछ सम्मान डिजर्व करते हैं, उनको हम प्रातिनिधिक तरीके से चैंपियंस ऑफ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के जो है असली खिलाड़ी, उनका सम्मान करने जा रहे हैं सर आपके हाथों। Thank you so much, Dr. Mule. I would now request our guest of honor, Union Minister Shri Rupala, to come and address. सकारात्मक सोच पे भी कार्यक्रम हो सकता है, ये सुन के मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। और ऐसे गरिमापूर्ण विषय को व्यवहार में लाकर इसके साथ जुड़े हुए और ऐसी गतिविधि करने वाले लोगों को चिन्हित करके उनका सम्मान करने का कार्यक्रम में मुझे मौजूद रहने का सौभाग्य देने के लिए मैं मुले जी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे ये कार्यक्रम है वैसे ये बोलने का भी विषय नहीं है, ये करने का विषय है। सो हम सब उसी दिशा में सोचे। मैंने रामचरितमानस में एक चौपाई आता है जिसमें लिखा गया है, बरनौ रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार। वो मैं मानता हूँ कि तुलसीदास जी ने उस समय हम सबके लिए एक आचार संहिता के रूप में ये चौपाई लिखी है। भारत की कोई ताकत है मैं मानता हूँ तो यही हमारी ताकत है। हम अच्छा सोचते, अच्छा करते, बिना स्वार्थ के कुछ काम करते, अपने सिवा कुछ सोचने के बात करने वाले लोग जो है वही राष्ट्र की ताकत बन सकते हैं। अपने बारे में तो सोचने वाले बहुत हैं, वो तो करते रहते, वो तो पशु प्रवृत्ति है। सो यही तो हमको इंसान बनाता है। तो ऐसी प्रवृत्ति को इस प्रकार से देश की राजधानी में फोकस करना, इसके लिए मैं मुले जी को भारत सरकार की ओर से अधिकारितापूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। I'll request Dr. Mule to felicitate Minister, sir. Thank you, Dr. Mule. That if you are thinking positively, there will be a solution. और ये solution अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, वेरी गुड, आप कीजिए। अगर आप solution इसका नहीं निकाल सकते हैं तो ऊपर वाला देख लेगा, and somehow or the other he will settle it. जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो एक सोशल जस्टिस बेंच है, मैंने चीफ जस्टिस साहब से बात की और मैंने कहा कि बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, इसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या क्या करें, आपका क्या ख्याल है। तो मैंने कहा कि एक स्पेशल बेंच बना दीजिए। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा उसका क्या नाम रखें। मैंने कहा सोशल जस्टिस बेंच नाम रख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप इस पे प्रिसाइड करेंगे। मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर प्रिसाइड करता हूँ। और इसी तरह से सोशल जस्टिस बेंच सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हुई। और आई मस्ट से दैट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे सोशल जस्टिस बेंच में काम करने का मौका मिला। और जो केसेस मेरे पास आए सोशल जस्टिस बेंच के, बच्चों के केसेस आए, बच्चों के मतलब ये नहीं कि एक दो बच्चे, हज़ारों बच्चे जिनकी कोई देखभाल नहीं करता था। मिसिंग चिल्ड्रन हम उसे कहते हैं, चिल्ड्रन हुआ किडनैप्ड। कई ऐसे बच्चे थे जिनको ऑब्जर्वेशन होम में डाला था क्योंकि उन्होंने कुछ किया होगा।
दे वर फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो उनकी केस मैं ले सका और काफ़ी काम किया मैंने। मेरे साथ जैसे दीपक गुप्ता साहब भी थे, तो काफ़ी काम किया हम दोनों ने, और टू सम एक्सटेंट वी वर एबल टू मैनेज द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। एक और केस आई थी, वो अखबार में एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई थी कि वृंदावन में बहुत सारे विधवा हैं, और विधवा वहाँ पे वृंदावन जाते हैं और उनके पास कुछ होता नहीं, कुछ पैसे नहीं होते हैं, जो उन्होंने कपड़े पहने हैं सिर्फ वही होता है, और वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भजन गाते हैं सुबह। तो वहाँ पे जो प्रीस्ट है वो उनको कुछ खाने के लिए देते हैं, तो वो खाना खा लेते हैं, फिर दोपहर को जाते हैं, फिर भजन गाते हैं और उनको फिर लंच मिलता है, शाम को जाते हैं उनको डिनर मिलता है। ये उनकी व्यवस्था है, अखबार में रिपोर्ट आई थी। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ यूपी को नोटिस किया कि ये सच है क्या। तो उन्होंने किसी को भेजा, वहाँ पे किसी ऑफिसर को भेजा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड। उन्होंने कहा कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, पर जितना अखबार में लिखा है इतनी बुरी स्थिति नहीं है, पर स्थिति तो बुरी है। तो फिर मैंने सेक्रेटरी को पूछा, एक महिला थी, मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा हाँ हम कर सकते हैं, पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि आप अपने चीफ मिनिस्टर साहब से बात कीजिए या अपने मिनिस्टर साहब से बात कीजिए, सैंक्शन कर देंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइए, वी विल ट्राई एंड सी व्हाट वी कैन डू। और इस सेक्रेटरी ने, ये केस मेरे पास 2 साल रहा। इन 2 सालों में उन्होंने एक हॉस्टल बना दिया, बड़ा सा हॉस्टल बना दिया। इन विधवाओं के लिए बैंक अकाउंट्स खोले, इन विधवाओं के लिए उन्होंने कपड़ों का बंदोबस्त किया। ये नहीं कि आप के पास कोई कपड़े नहीं हैं, लोगों को कहा, वृंदावन के लोगों को कहा कि अगर आपके पास कपड़े हैं आप कपड़े दीजिए। उन्होंने अरेंजमेंट किया खाने के लिए, ये नहीं कि वो भिखारी जैसे मंदिर में जाएं, भजन गाएं और उनको फिर खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ दैट इफ़ यू कैन इम्प्रूव, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। इसमें कुछ आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब वो सेक्रेटरी मैडम का तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, यही हुआ कि उनको, आई थिंक उनको दिल में सुख मिला, चैन मिला। हमें दिल में सुख मिला और चैन मिला कि ये विधवाएं जो हैं, हज़ारों में थी बाय द वे, 5,000 या 6,000 के आसपास थी, उनको एक अच्छा जीवन मिला। सो इफ़ यू लुक एट इट पॉजिटिवली, कि अगर कुछ हो रहा है जो होना नहीं चाहिए और अगर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। आप किसके लिए कीजिए, आप अपने बहन भाइयों के लिए कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। We'd now like to give away our Champions of Positivity Award for their social contribution, and I'll request the Minister, sir, to do the honors. Deepa Deshmukh ji. Mr. M.L. Chogle for his work on affordable housing. Abha Chaudhary, Chairperson, Anugrah. Gayatri Pathak of Sanat. Shri Jaswani ji, DSP and HRC Lal Bahar ji to come on the stage to take his award. Dr. Bharti Patil.
Kashish Bharadwaj. Rajat Kapoor. I am really thankful to Dr. Mule sir. She is the spirit behind this. In 1998, I came in IS. I think I completed 25 years. But we had the seed of coming in civil services because of him only. He is our senior. Let me congratulate all of you. There are many awardees on the dais and off the dais, but let me congratulate all of you. I am part of the Path of Positivity group. I am seeing Dr. Mule to function for so many years. And I am seeing lot of leaders he has created. I congratulate all of you being the ambassador of positivity. It is not an easy cause actually. It is very, very difficult work. We have 1.4 billion people. We are having more than 28 states and 8 union territories. More than 3,000 languages we speak. So much diversity, so many differences, so many problems, so many things. But still you taken we can say it is a Shiv Dhanusha of positivity. And you are performing with all your abilities. So it is a great, great thing to see that.